Today we are going to discuss Wordsworth poetry themes. वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफ़ी हम सेपरेट से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री थी या उन्होंने जितना भी काम किया, स्पेसिफिकली प्लेज़ या पोइट्री जितना भी उन्होंने काम किया, उनके अंदर थीम क्या होता था, ये आज हम बात करेंगे। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं क्रिटिसिज्म की, तो क्रिटिसिज्म के अंदर before going with the writer we have to discuss the themes of writer specifically कि राइटर का अंदाज़ क्या था, राइटर किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा लिखता था। As you all know, from matriculation you are discussing Wordsworth specifically in poems, as well as daffodils are there. So पोइट्री के अंदर अगर हम बात करें तो वर्ड्सवर्थ का बहुत सारा इन्फ्लुएंस रहा है नेचर के साथ। तो सबसे पहला जो थीम है वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का, दैट विल बी द बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। थ्रू आउट वर्ड्सवर्थ वर्क, नेचर प्रोवाइड्स द अल्टीमेट गुड इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन माइंड। All manifestation of the natural world, from the highest mountain to the simplest flower, elicit noble, elevated thoughts and passionate emotions in the people who observe these manifestations. Wordsworth repeatedly emphasized the importance of nature to an individual's intellectual and spiritual development. A good relationship with nature helps individual connect to both spiritual and social worlds. Yes, he is telling that before going with the nature, बेसिकली वो लोगों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम करना और एक दूसरे के अलावा ख़ुद का जो है वो ताल्लुक़ जब कायम करना है सोल के साथ, तो इंडिविजुअलिटी की जब वो बात करता है तो उसके अंदर जो इन्फ्लुएंस होता है सबसे पहले वो नेचर को उसने इनरिच किया है कि इंसान जब ख़ुद के सराउंडिंग्स की तरफ देखता है तो सबसे पहले उसे नेचर नज़र आती है, चाहे वो फूलों की शक्ल में हो, चाहे वो चांद सितारों की शक्ल में हो, चाहे ज़मीन आसमान की शक्ल में हो, चाहे धूप की शक्ल में हो, चाहे छाँव की शक्ल में हो। सो नेचर एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड द नेचर इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट टू डिस्कस विद इन अ थीम्स ऑफ Wordsworth poetry. A good relationship with the nature help individuals connect to both the spiritual and the social worlds. As Wordsworth explains in the prelude, a love of nature can lead to a love humankind in such poem as The World is Too Much with Us and London. In 1802, people who became selfish and immortal when they distance themselves from the nature by living in cities. Yes, जब उन्होंने 1800 कुछ की बात की, 1802 के अंदर जो लोग थे उनका सिटीज़ की तरफ मुंतकिल हो जाने की वजह से खुदा के साथ राब्ता और नेचर के साथ जो लिंक था वो बहुत कमज़ोर पड़ गया था। वो बहुत हद तक जो थे मटेरियलिस्टिक हो गए थे। लेकिन उस वक्त जो है वर्ड्सवर्थ ने कौन कौन सी नज़मों के थ्रू उनको जगाया, वो था एक नज़म थी दी प्रोल्यूट एंड द सेकंड वन इज़ देयर द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इट इज़ बीइंग पब्लिश इन 1807. सो एंड द लास्ट वन इज़ द पोएम इज़ लंदन। इन 3 पोएम्स के ज़रिए जो है वर्ड्सवर्थ नेचर को लोगों के जहनों में डालने की कोशिश की और लोगों को बताया कि किस तरह जो है नेचर का जो इन्फ्लुएंस है वो आपकी ज़िंदगियों में है। आज भी अगर आजकल आप देखें, कंपैरिजन करें, देहात की ज़िंदगी को देखें और शहरी ज़िंदगी को देखें, आपको बहुत हद तक फ़र्क नज़र आएगा। एक जगह पे ज़िंदगी इतनी स्पीडी है कि आपको टाइम नहीं है, दूसरी तरफ ज़िंदगी इतनी खुशगवार है कि आपको हर चीज़ को एंजॉय करने में मज़ा आता है। Humanity's innate empathy and nobility of spirit becomes corrupted by artificial social convention as well as by the scholarship of life. In contrast, people who spend a lot of time in nature, such as laborers and farmers, retain the purity and the nobility of the souls. कहता है कि बाज़ औक़ात जो है इंसानियत के अंदर नोबिलिटी का या स्पिरिट के जितने भी चीज़ें हैं या नेचर की जितनी चीज़ें हैं वो इंसान कब करप्ट करता है, जब इंसान आर्टिफिशियल की तरफ भागता है नेचर को छोड़ के। आपने देखा होगा आर्टिफिशियल का किरदार जहाँ भी पाया जाता है, चाहे जिस ज़ुमरे में भी पाया जाता है, वो आपकी नेचुरल ब्यूटी को बर्बाद कर देता है।
बात की समझ आ रही है? एक तरफ एक खूबसूरत लड़की है और एक तरफ पार्लर से तैयार हुई लड़की है. देयर विल बी अ ग्रेट डिफरेंस. Got it? And there is basically you can for the sake of just for the sake of understanding you can compare कि एक तरफ आप शहर में रहते हैं और आप शाम में अपनी बालकनी पे खड़े होकर नज़ारा करते हैं और एक तरफ दूसरा बंदा जो है वो कहाँ रहता है, गांव में रहता है और वो बेशक अपने घर में बैठ के शाम के नज़ारे को एंजॉय कर सकता है. देयर विल बी अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो द थिंग इज़ दैट वो कहते हैं कि जब भी आर्टिफिशियल का किरदार हमारी ज़िंदगियों में शामिल हुआ है, चाहे किसी भी टर्म में शामिल हुआ है, चाहे वो ब्यूटी की टर्म में शामिल हुआ है, चाहे वो आप उसको सोशल देख लें, चाहे आप उसको इकोनॉमिकल देख लें. आप एक कॉमन सी एग्ज़ाम्पल है आपकी जो दादी अम्मा, नानी अम्मा या आपकी अम्मा हजूर जो हैं, आप उनको देख लें. वो आज भी उनके जो है हार सिंगार में सबसे बड़ा जो उनका हार सिंगार है वो तिब्बत करीन होगी, पुराने वाली तिब्बत करीन. Got it? But on the other hand, in today's generation, you can see a lot of things are there. Mascara is there, face beauty is there, etc. etc. Mascara, base, powder, a lot of things are there. But the thing is that when you are going to, you can say, catch the artificial things, then on the other hand, you are destroying the beauty of nature. Basically that is a common example regarding all of you for this. And on the other hand आप देख लें कि किस तरह हमने, अगर आप शहरों की बात करें तो किस तरह जो है हमने शहरों के शहर तब आबाद करने के लिए कितने दरख्तों को हमने काटा. और आज आप देख लें कि अगर ये लिया शहर आबाद हुए तो यहाँ पे पहले कितने दरख्त थे जो कि अब उनका नामो निशान ही नहीं है. ऑन द अदर हैंड किस तरह आपके लिया शहर की ब्यूटी को जो है एक शुगर मिल की शक्ल में जो है आपके पूरे शहर की खूबसूरती को जो वो तबाह कर रही है. बेसिकली दैट इज़ आर्टिफिशियल. एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप ब्यूटी की तरफ जाएं, सो वर्ड्सवर्थ भी यही बात करता है कि आपकी नेचर के साथ मोहब्बत तब तक रहती है जब आप आर्टिफिशियल की तरफ नहीं जाते. जैसे ही आप आर्टिफिशियल की तरफ जाएंगे, चाहे वो ब्यूटी की टर्म में हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो जिस टर्म में भी हो, जैसे ही आप आर्टिफिशियल की तरफ जाएंगे तो आप नेचर से क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे. दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट. And the second one theme is there, the power of human mind. That is a very strong point in the poetry of Wordsworth. Wordsworth praised the power of the human mind. Using memory and imagination, individuals could overcome difficulty and pain. For instance, the speaker in lines composed a few miles above the Tinton Abbey in 1798 reveals his loneliness with the memories of nature, while the leech gather in resolution and independence. Yes, that is the point. Human mind, as you are the student of literature and you should know the worth of imagination in your life. And the Wordsworth basically discuss as well as nature is there, and the second one is imagination. Got it? A memory is there, fancy is there, a lot of things are there, but the strong thing is imagination. And he has used in several poems, as well as he has mentioned Tinton Abbey is there, and resolution and independence. Basically इसमें बहुत सारी बातों को जो है बाज़-औक़ात इंडिविजुअलिटी के ऊपर भी बात होती है, बाज़-औक़ात गैदरिंग के ऊपर भी बात होती है. बट इन लिटरेचर, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और वर्ड्सवर्थ को आपने पढ़ा है तो आपकी इमेजिनेशन के जो ज़ुमरे हैं वो बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं. वर्ड्सवर्थ की इमेजिनेशन को जीना ऐसा ही है जैसे ज़िंदगी को एंजॉय करना है. गॉट इट? बट इन पॉजिटिव वे. when you are going for the sake of strong imagination, आप बैठे बैठे अपने चीज़ों को इमेजिन करते हैं. बैठे बैठे आप अभी जैसे कि ये क्या नाम है आपका, रिमशा थोड़ी देर पहले जो है वो घर के अंदर झाड़ू लगा रही थी और हमने जैसे आवाज़ दी तो बेचारी को वापस आना पड़ा. बेसिकली दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन. एंड द थिंग वर्ड्सवर्थ हैज़ यूज्ड, दैट इज़ पावरफुल इमेजिनेशन एंड द पॉजिटिव इमेजिनेशन विद इन द लाइन्स ऑफ हिज पोएम्स. बेसिकली उसने कहा कि आप अगर उदास भी बैठे हैं ना तो isn't it possible that you can think something positive, something good. On the other hand, if you are sad,
if you have, if you are having nothing with you, you are economically not strong, you are not beautiful, you are ugly, you are not having the much worth to put on the face, the makeups, but on the other hand you are satisfied and you are thinking that I am a fairy queen, I am a prince, I am a princess. Basically, that is the thing being used. On the other hand, Wordsworth has used these sort of things for the sake of the killing of, you can say, your boreat and your negative thoughts as well as loneliness. ठीक है, आप बैठे बैठे अपने महबूब को अपने अपने पास इमेजिन कर लेते हैं in the terms of, not in the terms as you are all the student of literature, no need to be shy. And the thing is that when you are going for the strong imagination, it is a positive thing, but in the positive terms you are going for the sake of, आप यहाँ बैठे आप एक दिन आप सोचते हैं, ख्यालों में चले जाते हैं कि एक दिन मौला हुसैन मुझे अपनी करबला दिखाएंगे. That is a positive sort of imagination. You imagine that one day I'll visit the Kaaba. That is some sort of imagination. And you are imagining that in 2024 I and my family is going for Karbala, and I and my family is going for the Hajj, and I and my family is going for Umrah. Basically, that is some sort of positive imagination. Rest of the things are there. As you are the student of literature, and student of literature is not having some sort of, you can say, the touch with the Islam, but as we are the Muslim, so I am just for the sake of understanding putting the example as there for the religious point of view. So, the next, he is saying that the transformative powers of the minds are available to all regardless of an individual class or background. The demonstrative view emphasizes individuality and the uniqueness throughout his works. Wordsworth showed strong support for political, religious, artistic rights of the individual, including the power of his mind. In 1802, preface to lyrical ballads, Wordsworth explained the relationship between the mind and the poetry. Yes, lyrical ballads, that is a very famous work from the Wordsworth, and it is very famous in literature. And in that specific work, he has shown the power of man and the power of imagination through the power of your ability to think, and as well as emotion is there, as well as individuality is there, and as well as socialism is there. So poetry is emotion recollected in tranquility, as we have discussed in the you can say the definition, that is the mind transformed the raw emotions of experience into poetry, capable of giving play later poems such as Ode. In intimations of immorality, imagine nature as the score of the inspiring material that nourishes the active, creative mind. So, the thing is that he is telling that how the Wordsworth has shown the power of mind, as well as regardless of how much you are not strong in imagination, how much you are not strong in worth of political, how much you are not strong in the term of economical, but the imagination powers, you can think that one day I'll be a prime minister of Pakistan. You can think no one is going to catch, and no one is going to lock your imagination. That is free. So Wordsworth has given us a very, you can say, powerful aspect in literature, that you can kill your boreat, your gum ke lamhat, and etc., just to focus on something and just to focus on your positive imagination. Yes, the last one and the third one is the theme is the splendor of childhood. This is in Wordsworth poetry. Childhood is a magical, magnificent time of innocence. Children from an instant bond with nature, so many, so that they appear to be the part of natural world. Yes, वो कहता है कि बच्चे जो हैं
इनका बेसिकली ज़्यादातर बचपना दिखाया गया है। बहुत सारी चीज़ों को एज ही हैज स्टेटेड चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। सो मुख्तलिफ़ चीज़ों को उसने डिस्कस किया। वो कहता है कि नेचर के साथ जो ताल्लुक़ है, इमेजिनेशन के साथ जो ताल्लुक़ है, वो ज़्यादा ताल्लुक़ चाइल्ड्स का है, एज वी आर नॉट एंजॉइंग द नेचर। वो कहता है कि शुरू से ही एक ऐसा बॉन्ड बनता है कि जब आप चाइल्डहुड में होते हैं तब आप बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, तब आप बैठे बैठे अपने दोस्तों को कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, बैठे बैठे आपकी इमेजिनेशन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, आप बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को, एंड बिकॉज ऑफ इनोसेंस, दैट इज़ अनदर पॉइंट बीइंग डिस्कस इन हिज थीम्स, कि इंसान का इनोसेंस का जो लेवल है वो भी बहुत हद तक इमेजिनेशन को पाक रखता है। जैसे इंसान इनोसेंस के ज़ुमरे से निकलता है तो उसकी इमेजिनेशन बहुत हद तक ठीक नहीं रहती, वो बाज़ औक़ात गलत ज़ुमरे में भी इमेजिनेशन को लेके आता है। Their relationship to nature is passionate and extreme. Children feel joy to seeing a rainbow but great terror at seeing dissolution or decay. Yes, वो कहते हैं कि चिल्ड्रन का सबसे बड़ा खूबसूरत एस्पेक्ट जब वो रेनबो को देखते हैं, as you were the children and you have enjoyed, and nowadays if you are seeing rainbow, that's not a big deal. You are just saying and you are going to capture the thing, but you are not enjoying. But as you were the children, I think so you have enjoyed the rainbow. In 1799, Wordsworth wrote several poems about a girl named Lucy, as you have discussed in 9th, 10th, 11th, 12th, who died at a young age. These poems including She Dwelt Among the Untrodden Says in 1800 and The Strange Fits of the Passion Have I Known, praise of her beauty and the lament innocence and the splendor of childhood. Unlike the children who grow up, lost their connection to nature and lead unfulfilling lives. The speaker in Audi, Imaginations of Immorality, believes that children delight in nature because they have access to a divine, immortal world. As children age and reach maturity, they lose their connection, but gain an ability to feel emotions, both good and bad. Yes, that was the point as I was discussing with you, कि वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात बहुत हद तक जो है वो आप नेचर को तो एंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी चाइल्डहुड से निकलते हैं, हो सकता है आपकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो गंदी हो या चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो या चाहे वो ठीक हो. थ्रू द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड, पार्टिकुलरली मेमोरी, adults can recollect the devoted connection to the nature of their youth. Yes, कहते हैं कि जहाँ भी चले जाएं, आपके जो नेचर के साथ जो आपका बचपन में लिंक था वो आपकी यूथ के अंदर वैसा लिंक नहीं पाया जाता. बिकॉज द थिंग इज़ दैट वी आर मटेरियलिस्टिक, we are, you can say, socially corrupt, and we are economically corrupt, as well as we are corrupt in the sense of nature. We are just not enjoying the nature, we are just wasting the things as we can. Thank you.